गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है एज पार्ट ऑफ इंडिया एआई मिशन जो है वो लॉन्च करेगी, जो कि 10,370 करोड़ का इंडिया एआई मिशन है। तो एक बायस फ्री कल्चरली कंटेक्चुअलाइज्ड एआई मॉडल जो है इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। ये मूव आई है क्योंकि अभी चाइना ने रिसेंटली डीप सीक फाउंडेशनल मॉडल अपना लॉन्च किया है। तो यूएन आईटी मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि गवर्नमेंट एक्टिवली एंगेज कर चुकी है ऑलरेडी स्टार्टअप्स के साथ, रिसर्चर्स के साथ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ पिछले 1.5 साल में। और एक वर्ल्ड क्लास फाउंडेशनल एआई मॉडल जो है डेवलप किया जा रहा है और ये अगले 4 से 8 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। 10 कंपनीज़ को सिलेक्ट किया गया है कि 18,693 हाई एंड जीपीयूज़ जो है वो सप्लाई करें, जो कि मशीन लर्निंग और एआई मॉडल्स के लिए फिर इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होंगे। ठीक है। तो 10,000 जीपीयूज़ जो है वो ऑलरेडी हमारे इमीडिएट इंस्टॉलेशन के लिए जो है वो तैयार हैं एआई प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। गवर्नमेंट का प्लान है कि वो एक कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी जो है वो लॉन्च करे, जिससे स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को अफोर्डेबल एक्सेस मिल सके जीपीयू रिसोर्सेज का। गवर्नमेंट जो है वो 40% डिस्काउंट भी देगी स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो इन फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहेंगे। इंडिया एआई मिशन के अंदर गवर्नमेंट ने 18 एआई बेस्ड एप्लीकेशंस को भी सिलेक्ट किया है फंडिंग के लिए पहले फेज़ में। ये एप्लीकेशंस फोकस करेंगी एग्रीकल्चर, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो इंडिया क्यों इन्वेस्ट कर रहा है एआई डेवलपमेंट में? क्योंकि इंडिया अपनी डिपेंडेंसी जो है फॉरेन एआई मॉडल्स पर उसको रिड्यूस करना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है इंडिजिनस एआई रिसर्च को, सपोर्ट करना चाहता है मल्टीलिंगुअल एआई कैपेबिलिटीज़ को। फिर इससे हमारे को कॉम्पिटिशनल कैपेबिलिटीज़ भी इंडिया की बढ़ेंगी और हम ग्लोबल एआई एडवांसमेंट्स में कम्पीट कर पाएंगे। ठीक है। चैलेंजेस क्या है? पहले चैलेंजेस तो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीपीयू अवेलेबिलिटी हो, प्रोसेसिंग कैपेसिटी हो। फिर ट्रेंड रिसर्चर्स और डेवलपर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। एआई के एथिक्स, डेटा प्रिवेसी, सिक्योरिटी गाइडलाइंस बनाना, मतलब ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट की जो प्रोएक्टिव अप्रोच है उससे दिख रहा है कि गवर्नमेंट फंडिंग, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस पर फोकस कर रही है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं महाकुंभ स्टैम्पेड। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टैम्पेड हुआ है महाकुंभ मेला में इलाहाबाद में, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई है। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2014 में ही एक रिपोर्ट पब्लिश की थी क्राउड मैनेजमेंट पर, ताकि स्टैम्पेड को कैसे रोका जा सके। स्टैम्पेड्स जो हैं वो कई फैक्टर से हो सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल वीकनेसेस से, फायर या इलेक्ट्रिकल फेलियर्स, पुअर क्राउड कंट्रोल हो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो अगर अमंग स्टेक होल्डर्स। एनडीएमए की रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि क्या रीजंस हो सकते हैं क्राउड कंट्रोल फेलियर्स के। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने अंडर एस्टिमेट किया है कि क्राउड साइज़ कितना होगा, वेन्यू की कैपेसिटी से ज़्यादा क्राउड पहुंच गया है, होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो एंट्री से पहले बहुत कम लिमिटेड सी है, अगर लॉक्ड या क्लोज्ड एग्जिट्स हैं, वीक रेलिंग्स हैं, क्यू की मैनेजमेंट सही से नहीं की हुई, फिर सेक्टोरल पार्टीशंस भी नहीं है मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए। तो उससे जो है क्राउड कंट्रोल सही से नहीं हो पाता है। तो इनएडिक्वेट अरेंजमेंट से पैनिक हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाती है, तो उससे ओवर क्राउडिंग से रैपिड मूवमेंट शुरू हो जाती है। उससे लोग आपस में भागना शुरू कर देते हैं, क्रशिंग हो जाती है, सफोकेशन हो जाता है, ट्रैम्पलिंग हो जाती है। कई लोगों का सांस घुट कर भी जो है वो जान चली जाती है। ओके। तो क्राउड बिहेवियर का क्या रोल है स्टैम्पेड में? तो अंडरस्टैंड करना क्राउड बिहेवियर को बहुत क्रूशियल है। एक्शंस जो है कुछ ही लोगों के बाकी को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, तो इसलिए कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। तो कई इवेंट्स पर डिमांड ज़्यादा होती है अवेलेबल स्पेस से, तो उसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हो जाती है। इसको मैनेज करने के लिए इनपुट कंट्रोल, जैसे कि एंट्री रिस्ट्रिक्ट करना, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कर देना ऑनलाइन, ताकि रेगुलेट किया जा सके क्राउड को। लॉन्ग वेट टाइम्स जो है अगर कई बार बहुत ज़्यादा हो जाए तो लोग जो है वो एक्साइट हो जाते हैं और वो फेंसेस को क्लाइम करने लगते हैं। पुअरली एग्जीक्यूटेड अगर कंट्रोल मेजर्स हैं, जैसे पुलिस जो है वो इनकमिंग क्राउड के तरफ ही जो है कुछ ग्रुप्स को चेज़ करने चली गई, तो उससे डेंजरस कोलिजन्स हो सकती हैं या फिर वर्सनिंग हो सकती है सिचुएशन की। तो पहले भी ऐसे कई बार हो चुका है, कई बार कुंभ मेले में या यात्राओं में। तो एनडीएमए की जो रिपोर्ट है वो स्टैम्पेड्स जो है वो कहती हैं कि उसको प्रोएक्टिव प्लानिंग और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन से अवॉइड किया जा सकता है।
तो आपको उसके लिए अथॉरिटीज़ को कहा गया है कि हिस्टोरिकल क्राउड डेटा एनालाइज करो, अराइवल पैटर्न्स और पीक टाइम्स को देखो कि कब लोग ज़्यादा आ रहे हैं, एडवांस रजिस्ट्रेशन कर दो, टिकटिंग सिस्टम कर दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शेड्यूल देखो, सप्लाई मैनेजमेंट जो है आप को इंश्योर करनी है तो वेन्यू की कैपेसिटी को कैलकुलेट करो ताकि उसी के हिसाब से आप क्राउड बुला सको और उससे ज़्यादा आप क्राउड जो है वो ओवर क्राउडिंग को रोक सको। तो वैष्णो देवी और सबरीमाला में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है, उसी के बेसिस पर वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्राउड के अराइवल्स का जो है वो डेटा इकट्ठा कर पाती हैं। तो जो इंक्रीजिंग सप्लाई है रिलीजियस बिलीव्स की वजह से या जोग्राफी की वजह से, उसमें जो है इम्पॉर्टेंट है कि जो वेटिंग टाइम है वो उसको कंफर्टेबल बनाना विजिटर्स के, ताकि वो जो है बैरिकेड्स को लांघे ना, वो इम्पॉर्टेंट है अथॉरिटीज़ के लिए। तो रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए क्राउड मैनेजमेंट के लिए रिलीजियस साइट्स पर, और स्टेगिंग पॉइंट्स होने चाहिए विजिटर्स के लिए ताकि नेसेसरी फैसिलिटीज़ उन्हें मिले। तो अगर उनके वेटिंग टाइम्स जो है वो कंफर्टेबल नहीं है तो फिर वो जो है वो जो आपका क्राउड मैनेजमेंट आपने की हुई है उसको वो ट्रैम्पल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पब्लिश की है समरी फाइंडिंग्स, सेकंड ऑफ द टू कंसेक्यूटिव सर्वेज ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो ये डिज़ाइन किया जाता है, ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा कलेक्ट करने के लिए कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का हाउस होल्ड्स का जो वो गुड्स और सर्विसेज पर करते हैं। इसी के बेसिस पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिर कैलकुलेट किया जाता है। तो मंथली जो पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वही प्राइमरी इंडिकेटर होता है सारे पर्पसेस के लिए, एनालिटिकल पर्पसेस के लिए। तो इस हाइलाइट्स क्या है सर्वे की, इसमें देखा गया कि एक परसिस्टेंट डिक्लाइन हो रहा है अर्बन रूरल कंजम्पशन डिफरेंस में। ठीक है, तो कंजम्पशन इनइक्वालिटी जो है रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों में ही वो लगभग सेम रही है और वो डिक्लाइन हो रही है बेसिकली। ओके, तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्वांटानामो बे। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है कि लार्ज स्केल जो माइग्रेंट डिटेंशन सेंटर बनाया जाए यूएस नेवल बेस ग्वांटानामो बे में। तो ग्वांटानामो बे एक इनलेट है कैरेबियन सी में, साउथ ईस्टर्न क्यूबा के पास। ये एक लार्ज और वेल शेल्टर्ड बे है और ये यहाँ पर ही पोर्ट्स हैं कैबेनरा और बकुरॉन। ओके, वाइडली नोन हैज़ एज गिटमो, क्योंकि यहाँ पर जो टेररिस्ट सस्पेक्ट्स होते थे 9/11 के बाद उन्हें रखा जाता था। फैसिलिटी में जो है बहुत ही स्मॉल पार्ट ही है बेस का, इसलिए जो 30,000 डिटेनीज़ हैं उनको वहाँ पर रखने की कैपेसिटी अभी तक नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईडी ने केरला हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि लगभग 18 ECIRs रजिस्टर की गई हैं केरला में अगेंस्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सोसाइटीज़ टू इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग। तो ECIR क्या होती है, एक तरह से फॉर्मल एंट्री होती है कंप्लेंट्स की जो ईडी लॉन्च करता है। कोई भी मेंशन नहीं है पीएमएलए एक्ट में ECIR का, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक प्रैक्टिस बन चुका है ईडी का कि वो कंप्लेंट लॉन्च करते हैं कोई भी पीएमएलए का जो है अंडर एक्शन लेने से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई भी किया है कि ECIR जो है उसको आप एफआईआर से कंपेयर नहीं कर सकते, और ईडी जो है वो लीगली बाउंड भी नहीं रहती है कि वो ECIR की कॉपी जो है वो अक्यूज को दे। अदरवाइज एफआईआर की कॉपी तो देनी पड़ती है अक्यूज को। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सियोम 4 मिशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुभांशु शुक्ला एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं और इसरो के एस्ट्रोनॉट हैं। उनको पायलट जो है वो वन ऑफ द पायलट्स बनाया जा रहा है एक्सियोम 4 मिशन में। तो ये फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है, ISS जाएगा जो, और इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है एक्सियोम स्पेस द्वारा नासा के साथ कोलैबोरेट करके। तो ये जो क्रू है ये स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से ISS तक जाएगा, और एक बार जब पहुंच जाएंगे तो प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर लगभग 14 दिन निकालेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। ये मिशन जो है वो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट को भी स्टेशन पर भेजेगा एज पार्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट बिटवीन नासा एंड इसरो। ये प्राइवेट मिशन जो है ये इस पहले एस्ट्रोनॉट्स को जो कि पोलैंड और हंगरी है उन्हें ऑलरेडी जो है लेकर उनको भी लेकर जाएगा ISS पे। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 6 फर्म्स को
जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंगेज कर रही है कि वो जीपीयूज़ जो है वो सप्लाई करें इंडिया एआई मिशन के लिए। तो जीपीयू क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड जो क्विकली परफॉर्म करता है कई तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जीपीयू एक चिप कंपोनेंट भी होता है कंप्यूटिंग डिवाइसेस में। जीपीयू को यूज़ किया जाता है बियॉन्ड कंप्यूटर ग्राफिक्स एरियाज जैसे कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेदर फोरकास्टिंग, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, इन सब के लिए। तो सीपीयू और जीपीयू में क्या फ़र्क है? सीपीयू जो है वो डिज़ाइन किया जाता है हैंडल करने के लिए जनरल पर्पस टास्क्स जैसे कि रनिंग एप्लीकेशंस और मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज। ऑन दी अदर हैंड जीपीयूज़ जो है उनको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है स्पेसिफिक टास्क के लिए, ताकि 3D जैसे कि 3D ग्राफिक्स या वायरस वीडियो डिकोडिंग, ठीक है। सीपीयूज़ में कम कोर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू जीपीयूज़, लेकिन हर कोर जो है वो केपेबल होता है हैंडलिंग मोर कॉम्प्लेक्स और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लेप्रोसी। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है वो 30 जनवरी को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है लोगों को अवेयर करने के लिए लेप्रोसी के बारे में। तो लेप्रोसी, इसको हम हैंसेंस डिसीज़ भी कहते हैं, क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के थ्रू होती है ये डिसीज़ प्रिडोमिनेंटली स्किन को अफेक्ट करती है, पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करती है। अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो डिसीज़ जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हो जाती है और परमानेंट डिसेबिलिटीज़ भी कर देती है। तो बेसिकली एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है ये, हर एज में हो जाती है, ठीक है। ट्रांसमिट होती है थ्रू ड्रॉपलेट्स, नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू, अगर ये अनट्रीटेड रहे तो, ठीक है। ये डिसीज़ जो है वो स्प्रेड नहीं होती कैजुअल कांटेक्ट से। पेशेंट जो है वो स्टॉप कर जाता है ट्रांसमिट करना डिसीज़ को, अगर उसको ट्रीटमेंट शुरू हो गई है तो। यूजुअली 3 से 5 साल लगते हैं सिम्टम्स को अपेयर होने में। मेन सिम्टम जो लेप्रोसी का है वो है डिसफिगरिंग ऑफ स्किन, सोर्स, लम्प्स, बम्प्स, ठीक है। कुछ केसेस में बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अपने सेंस ऑफ टच और पेन भी खो देते हैं, ओके। तो लेप्रोसी असल में एक क्योरेबल डिसीज़ भी है, ओके। मल्टी ड्रग थेरेपी से इसको क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई श्रम माइक्रोसाइट एंड ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उन्होंने 2 सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी माइक्रोसाइट्स जो कि ई श्रम इनिशिएटिव के अंदर है, और ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स, ठीक है। तो ई श्रम माइक्रोसाइट एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है जो कि इंश्योर करेगा कि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनके पास सीमलेस एक्सेस हो बोथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स का। तो ये माइक्रोसाइट स्टेट स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होंगे, जो कि इंटीग्रेट किए जा रहे हैं नेशनल ई श्रम डेटाबेस के साथ। तो इसमें टू वे इंटीग्रेशन होगा, स्टेट पोर्टल्स का भी और ई श्रम पोर्टल्स का भी। एक वन स्टॉप सोल्यूशन देंगे ये सीमलेस एक्सेस के लिए, सेंट्रल और स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। तो ये सीमलेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफर कर रहा है, और ताकि जो है जो बेनिफिशरीज़ हैं वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ले सकें। मल्टीलिंगुअल एक्सेसिबिलिटी भी होगी इसमें। ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी जो है वेलफेयर सर्विस डिलीवरी में वो एनहेंस करेगा ये, ओके। तो ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स क्या है? एक डेटा ड्रिवन इंसाइट्स है उन ऑक्यूपेशंस में जहाँ पर शॉर्टेजेस हैं, ताकि जो जॉब सीकर्स हैं वो इंडस्ट्री डिमांड्स को जो है वो अलाइन कर सके अपने आप को। तो ये स्किल गैप्स को जो है हाई डिमांड सेक्टर्स में ब्रिज करने की ये एक इंडेक्स है, ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is large language model. This topic is important for your science and tech section. So Indian government has announced plans to develop its own large language models as part of the 10,370 crore rupees India AI mission. So the aim is to create a bias-free, culturally contextualized AI model. So this clarification has come after China's recent launch of its DeepSeek foundational model. So, Union IT Minister Ashwini Vaishnav confirmed that government has been actively engaging with startups, researchers, and academic institutions over the past 1.5 years to develop a world-class foundational AI model. So, this initiative is expected to take 4 to 8 months for completion. So, government has selected 10 companies to supply a total of 18,693 high-end GPUs, which are crucial for developing a machine learning and AI models. So 10,000 GPUs are already ready for the immediate installation to support AI projects. So government is planning to launch a common compute facility to provide startups and researchers with affordable access to GPU resources.
40% discount will be given for startups and research institutions as part of the subsidy for those who want to avail these foundational models. So under the India AI mission, government has selected 18 AI-based applications for funding in its first phase, and these applications focus on agriculture, learning disabilities, climate change, so as to make social and economic impact. So why India is investing in AI development? So this will reduce dependency on foreign AI models and promote indigenous AI research. This will support multilingual AI capabilities to cater to India's diverse linguistic and cultural landscape, and it will enhance computational capabilities to strengthen AI startups and research institutions. So it will help us to compete with global AI advancements as well. Okay. So while India's AI mission is ambitious, there are certain challenges. First of all, of course, is the infrastructure development, so as to ensure that seamless GPU availability is there. Then we require also skilled workforce. So training researchers and developers to build high quality AI models is also required. Then we also need to clarify regarding the regulatory frameworks so as to establish AI ethics, data privacy, and security guidelines. So government's proactive approach in setting up funding, compute infrastructure, and industry collaborations positions India strongly in the global AI race. Okay. So the next topic is Mahakumbh Stampede. This topic is important for your uh, governance section. So a stampede at the Mahakumbh Mela in Allahabad has claimed several lives. So NDMA in 2014 had already published a report on crowd management at big events and prevention of stampedes. So what are the causes of stampedes? So stampedes can result from multiple factors, including structural weaknesses, fire or electrical failures, poor crowd control, and lack of coordination among stakeholders. So the NDMA report highlights key reasons for crowd control failures, like such as underestimation of expected crowd size, exceeding venue capacity, limited holding areas before entry, locked or closed exits, weak railings or and lack of queue management, absence of sectoral partitions to regulate movement. Okay, so what are the consequences of poor management? So inadequate arrangements can often trigger panic or excitement, leading to overcrowding or rapid movement, which in turn can result in crushing, suffocation, and trampling of people. This report also identifies compressive asphyxia, that is the loss of oxygen, as the leading cause of fatalities in such disasters. So, what is the role of crowd behavior in stampedes? So, understanding crowd behavior is very important for preventing stampedes. The actions of a few individuals can influence many, sometimes leading to panic or disorder. So, therefore, a community-based approach is important to control the crowd. So, what is the impact of overcrowding? So, at many events, demand exceeds available space, leading to overcrowding. To manage this, input control, such as restricting entry through a mandatory registration process, can help regulate the crowd. Long wait times may also prompt individuals to climb fences, causing others to follow and leading to congestion in other area. So, additionally, poorly executed control measures, such as police chasing unruly groups towards an incoming crowd, can also create a dangerous collisions, worsening the situation. We have also seen past stampede incidents as well in Kumbh and other yatras. So, NDMA report has stressed that most stampedes can be avoided with proactive planning and effective execution. So, it outlines a holistic approach which includes controlling the crowd inflow, regulating the crowd within the venue, managing the crowd outflow. To manage the demands, authorities must analyze historical crowd data, arrival patterns, and peak times. Like festivals or holidays, advanced registration and ticketing systems, public transport schedules. For supply management, the venue's capacity must be calculated to avoid overcrowding. So examples from Vaishno Devi and Sabrimala show that online registration can help manage crowd arrivals and influence patterns. So authorities should focus on making waiting times more comfortable for visitors, because that is the point where the stampede situation starts. Okay, so there this report has also highlighted that there is a need for adequate infrastructure for crowd management and religious sites at religious sites, and therefore it recommends setting up of staging points for visitors equipped with necessary facilities. So the next topic is household consumption expenditure survey. This topic is important for your governance and economy section.
So Ministry of Statistics and Program Implementation has published the summary findings of the second of the two consecutive surveys on household consumption expenditure. So this household consumption expenditure survey is designed to collect information on the consumption and expenditure of households on goods and services. So this data is useful for determination of the consumer price index. So monthly per capita consumption expenditure is the primary indicator which is used for the most analytical purposes. So what are the key highlights of the survey? So there is a persistent decline in urban rural consumption difference across India's major states. Consumption inequality both in rural and urban areas uh, is almost declining, and for all the major 18 states. Okay, so the next topic is Guantanamo Bay. This topic is important for international relations. So recently, the U.S. president has signed an executive order directing the preparation of a large-scale migrant detention center at the U.S. naval base in Guantanamo Bay. So Guantanamo Bay is an inlet of the Caribbean Sea, indenting southeastern Cuba. It is a large and well-sheltered bay. It is served by the ports of Camanera and Boquerón. So Guantanamo Bay is widely known as Gitmo and has been used to house terrorism suspects since the 9/11 attacks. This facility occupies only a small part of the base and it currently lacks the capacity to house the 30,000 detainees. So the next topic is enforcement case information report. This topic is important for your governance section. So ED has recently informed the Kerala High Court that 18 ECIRs have been registered against cooperative banks or societies in Kerala to investigate money laundering in connection with financial irregularities. So what is ECIR? It's a formal entry of the complaint lodged by the ED. There is no mention of ECIR in any PMLA Act or rules. So ECIR is lodged before taking any action under the PMLA Act. So Supreme Court has held that ECIR cannot be equated with FIR. So ED therefore is not legally bound to provide a copy of the ECIR to the accused. Okay, it is basically an internal document. So the next topic is Axiom 4 mission. This topic is important for your science and tech section. So Shubhanshu Shukla, which is an Indian Air Force officer and an ISRO astronaut, was recently named as the pilot for Axiom Mission 4. So this Axiom 4th mission is the fourth private astronaut mission to the International Space Station. It is organized by Axiom Space in collaboration with NASA, and this crew will launch aboard a SpaceX Dragon spacecraft to the ISS from NASA's Kennedy Space Center in Florida. Once docked, the private astronauts will spend up to 14 days aboard the ISS. This mission will send the first Indian astronaut to the space station as part of the joint effort between NASA and ISRO. This private mission also carries the first astronauts from Poland and Hungary to stay aboard the ISS. Okay. So the next topic is graphics processing unit. This topic is important for your science and tech section. So as many as 6 firms will develop India's foundational artificial intelligence models using the newly provisioned GPUs. So what is a GPU? It is an electronic circuit board which can quickly perform many mathematical calculations. Like a CPU, GPU is also a chip component in computing devices. More recently, GPUs have been used beyond computer graphics in areas like high performance computing, machine learning, um, artificial intelligence, weather forecasting, and cryptocurrency mining. Okay, so let's compare CPU with GPU. So CPUs are designed to handle general purpose tasks like running applications and managing system resources, but GPUs are optimized for specific tasks like 3D graphics, video decoding. CPUs have fewer cores than GPUs, but each core is capable of handling more complex instructions. Okay. So the next topic is leprosy. This topic is important for your social issues. So World Leprosy Day is observed on 30th January every year to make people aware of leprosy and remove the misconceptions about it in society. So leprosy is also known as the Hansen's disease, and it is a chronic infectious disease caused by a type of bacteria called the Mycobacterium leprae. So this disease predominantly affects the skin and peripheral nerves. If left untreated, this disease may cause progressive and permanent disabilities. So it is a neglected tropical disease which still occurs in more than 120 countries with more than 2 lakh new cases reported each year. It is known to occur at all ages, ranging from early childhood to old age.
This disease is transmitted through droplets from the nose and mouth of an untreated case of leprosy. So, this disease does not spread through casual contact, and the patient stops transmitting this disease upon the initiation of the treatment. So, symptoms usually take about 3 to 5 years to appear. The main symptom of leprosy is disfiguring of the skin, sores, lumps, and bumps, which do not go away on their own after several weeks or months. In some cases, body parts may start losing their sense of touch and pain also. Okay, so leprosy is a curable disease and it can be treated through a multi-drug therapy. Okay, so the next topic is e-shram microsite and occupational shortage index. This topic is important for your economy and governance section. So recently, Union Minister for Labor and Employment has launched two significant initiatives. First is the state and union territory microsites under the e-shram initiative, and then the occupational shortage index, that is OSI. So what is e-shram microsite? It is a transformative initiative which is aimed to ensure that unorganized workers have seamless access to both state and central government welfare programs. So these microsites are state-specific digital platforms which are seamlessly integrated with the national e-shram database. So these will facilitate two-way integration between state portals and e-shram portals, and this will facilitate simplified registration of unorganized workers. So this will also provide a one-stop solution for seamless access to both central and state welfare programs. It offers a seamless registration process and access to a wide range of social security benefits. So this platform ensures multilingual accessibility so as to enable workers from different regions to access information and services in their preferred language. Okay, it will also enhance transparency and efficiency in welfare service delivery. Okay, so what is the occupational shortage index then? So it provides data driven insights into occupations which are facing shortages so as to help the job seekers align themselves or align their skills with industry demands. So this OSI will support policymakers, training institutions, and businesses in bridging the skill gaps in high demand sectors. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.